लोग इस बार सारे लोग बीजेपी को वोट दीजिए, ठीक है। नौकरी बिना पैसा में, स्कूल नया बन रहा है, कॉलेज बन रहा है। कांग्रेस का समय का आंगनबाड़ी सेंटर देखो और हमारा समय का आंगनबाड़ी सेंटर देखो, कितना डिफरेंस है। आज पूरा गरीब लोगों का समस्या हम लोग सॉल्व कर रहा हूं और आगे भी सॉल्व करने जा रहा हूं। और मैं 2-3 खुश खबर देना चाहता हूं। 1 अक्टूबर से ट्यूटर का दरमाहा बढ़ेगा, 1 अक्टूबर से आंगनबाड़ी का दरमाहा बढ़ेगा, 1 अक्टूबर से मिड डे मील का जो खाना देते हैं ये लोगों का भी दरमाहा बढ़ेगा, और 1 अक्टूबर से आशा का भी दरमाहा बढ़ेगा। ये सारा काम भी 1 अक्टूबर से हम करने जा रहा हूं। साथ साथ में जो भी प्रोविंशियलाइजेशन का काम बाकी है स्कूल का, ये भी हम जल्दी जल्दी करने के लिए जा रहा हूं। मतलब पूरा तुमको कश्मीर ले जाना पड़ेगा, तुमको पूरा आर्मी में ढुका के पूरा पाकिस्तान को मारने के लिए लेके जाना पड़ेगा। ठहरो, ये सब काम कौन कर सकता है? कांग्रेस कर सकता है, कांग्रेस कर सकता है। হয় ছাৰ বাইদেউসকল, ৰাজ্যৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ শেহতীয়া ঘোষণাৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে যে অসম চৰকাৰে অহা অক্টোবৰ মাহৰ পৰা ৰাজ্যৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি কৰিব। অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা, আশা কৰ্মী আৰু মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰন্ধন কৰ্মী সহায়িকাসকলৰো দৰমহা অহা অক্টোবৰ মাহৰ পৰা বৃদ্ধি কৰিব। লগতে ৰাজ্যৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলসমূহৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ যিখিনি কাম বাকী আছে সেই প্ৰাদেশিকৰণৰ কামো অসম চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে সমাপ্ত কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে। গতিকে ছাৰ বাইদেউসকল, এয়া নিশ্চয় ৰাজ্যৰ অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকা, আশা কৰ্মী, মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰন্ধন কৰ্মী সহায়িকা, টিউটৰ শিক্ষক আৰু ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে এটা অত্যন্ত বৃহৎ সুখবৰ। সেয়েহে লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি আজিৰ এই সুখবৰটো জনাই দিব। লগতে নতুনকৈ অহা ছাৰ বাইদেউসকলে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।